तो भाई सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल केम छो मजामा पब्लिक कैसी है एक नंबर पब्लिक भाई और सबका खुशामद है अपने हमजा चैनल पे। मेरा नाम है सलमान और मैं आपका वेलकम करता हूँ। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा। तो आज का टॉपिक है कि एक्टिवा का जो वाइब्रेशन है उसको कैसे कम करना है। तो ये बेसिकली जो है हर मोपेड में आता है जो विदाउट गियर की गाड़ी है। विदाउट गियर की जितनी भी गाड़ी है उसमें सब में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बहुत से लोगों को ये फेस होता है। तो ये कैसे करना है काम और इसका वाइब्रेशन कैसे निकालना है वो आपको मैं दिखाऊंगा आज। तो भाई प्लीज़ जिसको भी ये वीडियो देखना है कि एक्टिवा का वाइब्रेशन या एक्सेस का वाइब्रेशन, कोई भी गाड़ी जो विदाउट गियर है उस गाड़ी का वाइब्रेशन कैसे निकाले, तो ये वीडियो आपके लिए। प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखिए। और जिनको भाई ये वीडियो नहीं देखना है तो पहले मैं बोलता हूँ भाई स्किप कर लो, रैंडम वीडियोस बनाता हूँ। हाँ, तो जिससे लोगों को एक अवेयरनेस मिले और मालूमात हो। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, यूट्यूब से ही मैं सीखता हूँ। और भाई मैं खुद ये गाड़ी को जो है वाइब्रेशन जो है निकालने वाला हूँ। कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा, वो आपको सब बताऊंगा मैं आप वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। Não. Abusada, mente. Abusadamente. Bom, 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 bom. Mas só que a profissão das minas é Abusadamente ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai sentando. abusada, mente. Abusadamente. Bom, 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 bom. Mas só que a profissão das minas é Abusadamente ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai sentando. El lenguaje de las metáforas. El lenguaje de las metáforas.
मजा हो गया वे सानू इश्क तेरे दा नशा हो गया नी सानू इश्क तेरे दा नशा हो गया नी साडा तेरे बिना जीना सदा हो गया। तो भाई आपने देखा ये था कैसे आप आपकी गाड़ी का जो एक्टिवा है एक्सेस है कोई जो मोटर गाड़ी है बताओगे इसका वाइब्रेशन कैसे निकाल सकते हो। तो इसके अंदर जो आगे होता है वो पुली होता है और पीछे जो होता है क्लच होता है। तो एक जनरल सर्विसिंग करने के बाद में आपकी गाड़ी का वाइब्रेशन पूरा निकल जाएगा, उसमें से कोई आवाज़ नहीं रहेगा कुछ नहीं। लेकिन इन केस कभी ऐसा होता है कि थोड़े दिन के बाद फिर से वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो पीछे का जो क्लच है बड़ा मैंने दिखाया वो क्लच को साफ करना है और उसको खोलना भी है और खोल के उसको अंदर से अच्छे से सर्विसिंग करनी है, उसको ग्रीसिंग ऑयलिंग करना है और फिर लगा के फिर वापस से आपको जैसे मैंने बताया वैसे पूरा काम करना है। तो आई होप अभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन वीडियो है। अपनी गाड़ी को हम खुद कैसे सर्विसिंग कर सकते हैं। अगर आप ये बाहर देने जाओगे 200-250 रुपये तो लगेंगे भाई इसके, तो वो पैसे बच गए। सिर्फ इतना है कि आपके पास हथियार होना जरूरी है भाई, अगर हथियार होगा तो ये आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो और अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो भाई। हाँ, सलाम इंडिया।